let's start with chapter number 2, accounts of not for profit concern. Now to start with weightage, weightage is of 13 marks, मतलब total 13 marks के लिए question board paper में आएगा. Out of that 12 marks for practical question and 1 mark for objective. Let's see meaning of not for profit concern. ठीक है? Not for profit organization refers to the organization that are used for the welfare of the society. So basically they are there for the welfare of the society and are set up as a charitable institution which functions without any profit motive. So next thing, they function without any profit motive. Their main aim is to provide service. So your main aim is to provide what? Service to a specific group or public at large. So this is the meaning of not profit concern. Now exactly we'll see question का format क्या होगा इसमें. So not for profit concern में your question will be, in question receipt and payment account will be given to us. So question में अपने को receipt and payment account दिया होगा. So this receipt and payment account, we should remember that this receipt and payment account is nothing but your cash book. Cash book means it records or it maintains the record of cash inflow and cash outflow. So यहाँ पे whenever cash comes in, it will be recorded on the debit side of receipt and payment account, and whenever cash goes out, it will be recorded on the payment side of receipt and payment account. So can we say all receipts will be recorded here and all payments will be recorded here? Now just keep it in mind, in question जो receipt and payment account दिया होगा उसका debit side will indicate all receipts, and the receipts are of two types. One is revenue receipt and one is a capital receipt. In the same way, payments are of two types. One is revenue payment and one is capital payment. Below this question, adjustments दिए होंगे अपने को, and with the help of this receipt and payment and 4 to 5 adjustment, we have to prepare final accounts of non-profit organization. So here what we do, we prepare first thing in solution, you will be preparing first income and expenditure account. So income and expenditure account पहले बनेगा and then we'll prepare a balance sheet. So next is balance sheet, and this balance sheet is of current year. जिस ईयर का रिसीट पेमेंट होगा उस ईयर का बैलेंस शीट होगा. सो पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. क्वेश्चन इस तरह से होगा, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा विच इज नथिंग बट योर कैश बुक. तो डेबिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स. रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एंड पेमेंट्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट. इसमें से things which are revenue in nature will be recorded in income and expenditure account. Now what is income and expenditure account? Say this, income and expenditure account, we should remember that it is a nominal account. Nominal account means it will record all expenses and income. So debit side all expenses. So all expenses will be recorded here. Specifically all revenue expenses will be recorded here. And all revenue incomes or revenue receipts will be recorded on the credit side. Okay, so out of this, revenue receipts, income expenditure, and income expenditure credit side, and revenue payments, income expenditure debit side में जाएंगे. In the same way, things which are capital in nature will be recorded in the balance sheet. Now, we'll see capital receipts, revenue receipts, capital expenditure and revenue expenditure के example. Now, if you see in this LMR, again, final accounts में they said receipt payment which is given to us and we have to prepare income expenditure and balance sheet. Receipt payment account के बारे में ये बोला है, it's a real account, yes, it is a cash book, so real account. It is prepared at the end of the accounting period and it is nothing but a summary of a cash book. Just now we discussed this, right? तो ये आपका receipt payment account है. Say this in this way, receipt and payment account is there. Okay.
यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर कैश और बैंक. If there is a cash balance or bank balance, that will be reflected on the debit side of receipt and payment account. If there is a bank overdraft, it will be recorded on the credit side. So agar balance brought down is there on the credit side, that means it's a bank overdraft. So that will be the opening balance of bank overdraft. Then receipts, debit side will be receipt side, so यहाँ पे revenue receipts and capital receipts दिए होंगे. Credit side, expenses, revenue expenses and capital expenses, and then you will close it. So either it will show a debit balance or credit balance depending on the will write the balance. तो ये सब क्वेश्चन में दिया होगा. Now एग्जाम्पल लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है. सी दिस रेवेन्यू रिसीट्स में प्राइम फैक्टर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ये आएगा डेबिट में. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इफ यू हैव इन्वेस्टेड मेड इन्वेस्टमेंट समवेयर, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, सो इट विल बी रिसीट्स, सो रेवेन्यू रिसीट. जनरल डोनेशन, that means the donation given without any specific purpose are called general donations. Profit on sale of asset, then sale of scrap or old newspapers, and government grants if received for a general purpose, that means no purpose, general purpose के लिए अगर अपने को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा. सो ये एग्जांपल्स थे रेवेन्यू रिसीट्स के. मतलब रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रेवेन्यू रिसीट्स यानी क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जनरल डोनेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट्स विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस. देन कैपिटल रिसीट्स, मतलब जो सेकेंड आइटम है ये, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. तो कैपिटल रिसीट्स में एंट्रेंस फीस, लेगेसीज, स्पेशल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस and government grants, but here with a special or specific purpose. So here these are example of capital receipts which may be there on the receipt side of receipt and payment account. Then this we have discussed about, ये हमने डिस्कस किया था रिसीट साइड के बारे में. अब देखते हैं पेमेंट साइड में. देखा था कि पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सी एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑफिस and administrative expenses like salary, rent, printing and stationery, etc. Then expenses incurred to achieve primary objective of organization like charity, medical expenses, etc. So these are also your revenue expenses. Then interest on loan will be taken as revenue expense. So ये था example of revenue expense. देन रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर साइड में रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस भी आएंगे. तो ये एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंस के, परचेज ऑफ फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल. देन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब आप सॉल्यूशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके फीचर्स पहले देख लो. इनकम एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट prepared on the accrual basis and it is prepared at the end of accounting period. Now let's see exactly what. जब आप लोग आंसर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो हियर all revenue expenditure, that means on the debit side all revenue expenditure will be recorded. So here if you write any expenditure, any expense, so first thing we should know that outstanding of current year will be added in that particular expense, less outstanding of last year. So अगर last year का कोई item होगा जो outstanding है तो उसमें से minus होगा. Then prepaid of current year will be subtracted and prepaid of last year will be added. Just remember this simple formula. अगर आप एक्सपेंसेस की बात करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सैलरी. सो इफ सैलरी इज गिवन, अगेन सैलरी इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस, तो हम लोग उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में. नाउ दिस रूल कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस. सो उसको हमने इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया. सो अगर करंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो इट विल बी एडेड. एट द सेम टाइम क्वेश्चन में अगर लास्ट ईयर का सैलरी दिया होगा तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. Current year prepaid, now current year prepaid means it belongs to next year.
so it will be subtracted. And last year prepaid, तो last year का prepaid मतलब that belongs to current year, that's why it will be added. It is as simple as this. If a particular receipt is given, again formula for that will be outstanding of current year will be added, outstanding of last year will be subtracted, then pre-received of current year will be subtracted, because pre-received हमने एडवांस में रिसीव किया, so it basically belongs to next year, इसलिए यहाँ से माइनस होगा. And pre-received of last year will be added. So यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल होगा सब्सक्रिप्शन का. तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे, ऑलवेज रिमेंबर फैक्टर्स रिलेटिंग टू करंट ईयर विल बी एडेड हियर. अब फैक्टर्स रिलेटेड टू करंट ईयर मीन्स व्हाट? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऐड होगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू करंट ईयर. अगर प्रीपेड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन दिया होगा, ना प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू व्हाट? नेक्स्ट ईयर. तो हम लोग उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे. बट अगर प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर होगा, सो प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर बेसिकली बिलोंग्स टू करंट ईयर, so it will be added. So that's what we have recorded here, and the corresponding effect will be in the balance sheet. Okay, so ये जो balance sheet आपको दिख रहा है, that will record all items of capital in nature. So all capital receipts will be recorded here, and all capital payments will be recorded here. Now example of capital receipts, entrance fees अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर कहा कि entrance fees is to be capitalized. Now we know capitalized means what? We add it to the capital fund. Or life membership fees or legacies, items which are not recurring in nature are capital. So your capital receipts will be recorded in the balance sheet on the liability side. In the same way, capital payments, capital expenditure, that means any asset purchase, like purchase of furniture or purchase of computer or purchase of any machinery, will be recorded on the asset side of the balance sheet. So this is the format of the question of NPO, that is non-profit organization, और आंसरिंग मोड इस तरह से होगा जिसमें हम लोग बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर. इनकम एक्सपेंडिचर इट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओनली. यहाँ के इनकम एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड विथ all expenditures which are of revenue in nature, and it is credited with all incomes or receipts which are revenue in nature. When you will close income expenditure and it shows debit balance, मतलब अगर income expenditure का debit side बड़ा होगा तो it's a deficit. We don't call it loss here, we call it deficit. And if we close, second possibility, if you close and income expenditure shows a credit balance, मतलब अगर credit side बड़ा होगा, so it's a surplus for us. Then that surplus or deficit will be transferred to capital fund, or it will be added or subtracted respectively as the case may be. And then finally our balance sheet will tally. So this is the way we are going to solve the question in exam. Now let's see few points, few additional points here. See यहाँ पे income expenditure का format अपने को दिया है question का. Income expenditure जो हम लोग solve करेंगे. So all revenue expenses will be debited here, and all revenue receipts will be credited here. In balance sheet, obviously capital fund, then agar surplus, if you are getting surplus, it will be added. If you are getting deficit, it will be subtracted, and all other capital receipts will be recorded on the liability side. Then on the asset side, fixed assets, current assets, or any other capital expenditure will be recorded, and their balance sheet will tally. Now the next important point. Frequently asked adjustments. Now, outstanding expenses of current year. The frequent asked adjustment में पहला adjustment है outstanding expense of current year. Now it is as simple as that. These outstanding expenses belong to current year. That means it will be added in the expense of the current year, and it is shown in the balance sheet liability side. So it is add to respective expense and shown balance sheet liability side of the current year, balance sheet liability side of the current year.
Okay. Then if you come across prepaid expense of current year, now prepaid expense of current year, so less from current year expense, obviously in income and expenditure account जो expense हम लोग दिखाएंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, less करेंगे, and again it will be recorded, second effect will be given on the asset side of the balance sheet. See, subtract from the respective expense and balance sheet asset side. Okay. Then outstanding income of current year, अगर outstanding income दिया है current year का तो current year income में add होगा और balance sheet के asset में जाएगा. See, add to respective income and balance sheet asset side. Then pre-received income, pre-received, just now I told you pre-received means what? It belongs to next year. So it will be subtracted from respective income and balance sheet के liability side में जाए. Next, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे करंट ईयर बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर हुआ, सी समथिंग विच इज नॉट गिवन देयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर इंक्लूड होगा करंट ईयर के एक्सपेंस में तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर सब्ट्रैक्टेड एंड शोन इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट. इन द सेम वे प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, prepaid expense of last year will be added because prepaid of last year means it belongs to current year. So prepaid of last year will be added here. In the same way, outstanding income of last year, मतलब subscription last year का outstanding अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, subscription में से less करते हैं last year outstanding, and it is shown in the last year balance sheet on the asset side. And pre-received of last year हुआ, that is pre-received subscription of last year, which technically belongs to current year. तो pre-received of last year current year में add होगा. Okay. Then one important point, in case the question details regarding opening stock, closing stock and purchases are given of any item, suppose stationery की बात करते हैं. If you read the question में आपको अगर बैलेंस शीट दिया है, जिस बैलेंस शीट में आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया होगा, क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है दैट मीन्स इट्स अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. और रिसीट एंड पेमेंट में आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी दिया है, मतलब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज ऑफ स्टेशनरी दोनों दिया है, तो इमीडिएटली ये चेक करना है कि एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या. सो इफ यू कम अक्रॉस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज and closing, all this in a single question, in that case we have to use this formula, we have to use stationery consumed का formula. And what is the formula for stationery consumed? Opening plus purchase minus closing. और ये formula हमें use कब करना है, जब हमें stationery का opening, stationery का purchase और stationery का closing ऐसे तीनों चीजें question में दिखेंगे तब. Same rule is applied on medicines, see, drugs, sports material, postal stamps. तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स आर गिवन, देन रिसीट पेमेंट में परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प दिया है एंड एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प दिया, मतलब ओपनिंग भी है, परचेज भी है और क्लोजिंग भी है, उस वक्त हमें कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे होगा पोस्टल स्टैम्प्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यूज करना है. सो बहुत बार क्या होता है, वी हैव अ कंफ्यूजन कि व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला, दिस कंज्यूम्ड का फॉर्मूला. तो द सिंपल आंसर इज व्हेनेवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, देन परचेस एंड देन क्लोजिंग, एवरीथिंग इज गिवन, then we have to use this formula. And what is the formula for that particular expense consumed, or stationery consumed, medicines consumed, or postal stamps consumed? What is the formula? Opening stock plus purchases less closing stock, and the final amount will be written on the outer column. That's the consumed part. Okay, so this is all about NPO.